Good morning, students. In last video, we were doing in text question of page 109. Beta, we had done two questions. Let's do third question. It is on page 110. Now, question is a trolley while going down in an inclined plane. Beta, this is the trolley and this is inclined plane. इस तरह से जो टेढ़ा होता है उसको इंक्लाइन प्लेन कहते हैं. जैसे कई बार आप लोगों ने ट्रकों के पीछे भी देखा होगा, जब ट्रक में सामान चढ़ाते हैं तो उसमें इंक्लाइन प्लेन का यूज़ होता है. तो इसी तरह से इंक्लाइन प्लेन है. ट्रॉली इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नेक्स्ट हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 cm per second square. Its acceleration is 2 cm per second square. Now what's the question? What will be its velocity 3 seconds after the start? 3 सेकेंड के बाद आफ्टर 3 सेकेंड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी. मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट v एंड u इक्वल टू 0 आफ्टर द स्टार्ट. मीन्स जो वो ट्रॉली स्टार्ट हुई. लुक हियर बेटा, एक्सेलरेशन इज 2 cm per second square, टाइम 3 सेकेंड, u 0, v we have to calculate. We know from first equation v minus u equal to 80. v minus u is 0 equal to 2. Acceleration is 2 into time is 3. No need of changing anything beta, centimeter per second, and here also time is in second. So from here by substituting value we get v equal to 6 centimeter per second. Means the speed of the trolley after 3 seconds is 6 centimeter per second. Now question number 4. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? Beta, a racing car has question number 4. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कोई रेसिंग कार है, कोई कार है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स एक्सेलरेशन इज गिवन है. व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट. टाइम 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर means s equal to question mark after start means u equal to 0. Means if you have to calculate s in which time is also given, from these two equations we will use this one, because in this equation time is there and in this equation time is not there. So I want you to do it yourself, because as you have to calculate, u is given, p is given, a is given. Try yourself beta. Now question number 5. In question number 5, a stone is thrown vertically upward. बेटा, जब भी स्टोन को आप ऊपर फेंकते हो तो v इक्वल टू 0 मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 होगी आपकी. आगे दिस आल्सो यू विल ट्राई योरसेल्फ, जस्ट आई विल गिव यू द हिंट. vertically upward, if the acceleration of the stone during the motion is 10 meter per second square, means acceleration is 10 meter per second square. Beta, you have to put here minus in acceleration, because when the stone is moving in the upward direction its velocity decreases. When velocity decreases, acceleration become negative. Now velocity vertically thrown with a velocity of 5 meter per second. When the stone was thrown, its velocity was 5 meter per second. Now what's the question? In the downward direction, what will be the height attained by the stone? हाइट निकालनी है आपको, इधर ये हाइट निकालनी, इसको h बोलते हैं, but here you can take s. Now in this question you have u, v, a, u, v, a, and s you have to calculate. So use third equation. With the help of third equation you can calculate height, that is s. Second, and how much time will it take to reach there?
you can use first equation for calculating time or second equation, it's your choice, because in first equation v minus u equal to at, you are having all these three things, v, u, a, all the three physical quantities are there, you can calculate t. Now your next topic is circular motion, uniform circular motion, last topic of the chapter. बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? When the body moves in a circular path, बेटा एक बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड. सपोज कोई कार है, गोल चक्कर में घूम रही है. अगर गोल चक्कर में ये कार घूम रही है और सपोज इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गोल चक्कर घूमे जा रही है. ठीक है, ऐसे गोल गोल घूम रही है, उसकी स्पीड सेम है. दैट इज वाई यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मीन्स उसकी स्पीड सेम है. सर्कुलर मोशन मीन्स गोल चक्कर में घूम रही है. ठीक है, दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. वाई? बिकॉज यू कैन सी हियर द डायरेक्शन इज चेंजिंग. बेटा इसमें कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है. जब गाड़ी इधर आती है तो डायरेक्शन ये वाला हो जाता है, जब इधर जाती है तो ये हो जाता है, और इस तरीके से इधर जाती है तो ये ऐसे जाती है तो ये डायरेक्शन. आप देखो 4 डायरेक्शन में हो गया. वैसे सर्कुलर मोशन में हर थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कंटिन्यूसली जहाँ टेंजेंट है उधर से इसके बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं. सो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, देन वी से दैट इट इज़ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर motion. Means when an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. Now here 4-5 diagrams are there. Means polygon is also drawn here and rectangle is also drawn here. In case of rectangle, you can see when the object is moving in this direction, it has upward direction. It has on the left, means it has direction in this side towards, and this side is west, then in the south direction, then again in the east direction, and you can see there the direction is continuously changing. Now what will be the speed when the body moves in a circular motion? Now the speed will be given by 2 pi r upon t, where 2 pi r is the circumference of the circle and t is the time taken. This is all about your circular motion. Beta, one more example. If you tie a stone on a thread and start reeling it, what you will, and just release it, on releasing what you will see that suppose this is a stone on this thread and you start reeling it like this, what will happen? And when suddenly if it comes here and you just release it, what you will see that it will move in this direction, means its speed will be in this direction. Speed is the one which is here, means this is the speed when it is released. So this is all about uniform circular motion. Now students, with this chapter is over, try to solve the questions which is there, means questions are there in your book in the exercise. If you find any difficulty, you can call me and solutions are with you. Thank you.